नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। और आज चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम अपना आज का ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि साइंस का है। और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं आर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। जब पर्यावरण की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जहां पर हम सांस ले रहे हैं, यानी हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ ये विषय है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो 8800440559 पर फोन करें और सीधा हमारे साथ जुड़ें। अपना कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बेहिचक पूछें। हमारे एक्सपर्ट इसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। Would like to begin this session shortly, but before that, we have a message of G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit in the country for the first time in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. With this positive note, would like to begin this session, and I would like to invite and introduce on the screen श्री सुशील कुमार जी। आप पीजीटी बायोलॉजी हैं, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी, एंड वेलकम टू द ऑल द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और पर्यावरण की हम बात करने जा रहे हैं, तो पहला सवाल जो मुझे लगता है जिससे शुरू करना चाहिए कि पर्यावरण होता कैसे, क्या है, इसको कैसे समझें। हालांकि कक्षा 10वीं के बच्चे पर्यावरण के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन हमारे साथ जो और दर्शक भी जुड़ रहे हैं उनके लिए आप एक सामान्य सी भूमिका बताएं और फिर शुरू करें अपना सत्र। यस राहुल जी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्यावरण, दैट इज द एनवायरनमेंट। सो before going in detail, I would like to ask one question from your side. Please. Dear Rahul ji, when you have heard the word environment, either from TV or either from newspaper or from the people that are found to your surrounding, so please. I think it was my book when I was in my class 7th maybe. Yes. That was the time when I heard or I read this word environment. So when you came across of the word environment or you came across of the chapter environment, so definitely you have studied the various components in the environment that interact with each other and how those components are impacting we people. So you have also heard about the word that is known as ecosystem. So usually we people are discussing about so many ecosystem, like there is an educational ecosystem, there is an physico-chemical ecosystem. So in our daily life we usually use the word ecosystem, but here the meaning of the ecosystem is quite different. So all organisms such as plant, animal, microorganism and human being, as well as the physical surrounding, interact with each other and maintain a healthy relationship, or we can say the balance in nature. So all the interacting organisms in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. So we will discuss in detail. So let us start by moving to the slides that I have prepared. Please, so please that our student will be able to understand the environment as well as ecosystem in a better way. So we people are living on the planet Earth, and on the planet Earth there are so many ecosystem are found. As I have already discussed with you that all the interacting organisms in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. Thus we can say that ecosystem consists of some component. We can say there is one living component that is known as biotic component,
as well as there is one component that is non-living component. We can say that the physical factor or abiotic component like temperature, like rainfall, like wind, like soil, like minerals. So these are the abiotic components. So as you people are well aware about the environment, so in the environment we can say that there are so many ecosystem are found, and ecosystem comprises of non-living and living things, and that make a ecosystem. So usually we discuss about the ecosystem and environment in a separate branch of science that is known as ecology. Ecology is a fantastic science. It is the study of relationship between living things and between the non-living things and their environment. And in the ecology, uh, we usually discuss about the ecosystem. And ecosystem is a system of living things that interact with each other and with the physical world. And there is one word that is known as biome. So, as the biome is concerned, biome is a collection of related ecosystem. So, in an ecosystem, there are so many related ecosystem comprises a biome. So, we can say that all the interacting organisms in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. For example, Rahulji, we usually see about the forest, we usually saw about the pond, we usually saw about the river, that is the you people are living in the Delhi. So there is the Yamuna River, and I am from the Lucknow, so here is the Gomti River. So river is also a kind of ecosystem. So we can say that uh, there is a definite classification of the ecosystem. Uh, when the ecosystem which exists in nature on its own, मतलब जो नेचुरली पाया जा रहा है अपने आप, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जैसे लेक हो गया, जैसे ओशन हो गया, जैसे रिवर. सो सच टाइप ऑफ द इकोसिस्टम usually comes under the category of natural ecosystem. So on the other hand, there are the ecosystem which are made by the we people, means man-made ecosystem. So these are called as artificial ecosystem. For example, in our home, we people usually make the aquarium. We people usually sow the seed in the field, and by the help of that we raise the crops. So crop field is an artificial ecosystem. We people develop the garden. For example, in my city Lucknow, there is the National Botanical Research Institute, which has a vast variety of the collection of the plant. So the National Botanical Research Institute has the garden. So it comes under the category of the artificial ecosystem. So similarly, so we can say that in the nature, there are the desert, there is the rainforest, ocean, taiga, tundra, chaparral, grassland, temperate, forest. So there are so many ecosystems are found, and these ecosystems are fulfilling our needs that we people are required for our survival. So as the ecosystem is concerned, so usually ecosystem may be of two types. One is the natural, another is the artificial. So natural we have already discussed. It may be the forest, it may be the grassland, it may be the aquatic or desert. Or artificial ecosystem may be the terrestrial ecosystem like cropland ecosystem, may be the microbial ecosystem like there is in our body there are so many microbes, useful microbes are found inside our body. So we usually show that the microbial ecosystem of the gut biome. Or so there is the aquatic ecosystem. So if we people develop around like aquarium in our home, so it comes under the category of the artificial ecosystem. So as any ecosystem is concerned, so the ecosystem usually comprises of the biotic as well as abiotic component. So as the biotic component is concerned, the word bio means living.
So usually the living things that are found in an ecosystem comes under the category of the biotic component. Like Rahulji, we people are the biotic part of the ecosystem, like the plants, like the animal, like the human being, like the bacteria, like the fungus, like the algae. So these Okay. all comes under the category of the biotic component of the ecosystem. Okay. We will discuss in detail about the biotic component of the ecosystem, because in the biotic component of ecosystem, some organism or some green plants do the process of photosynthesis, and with the help of it, they fix the radiant energy of the sun into the usable energy, and with the process of the photosynthesis. So these are known as producer, and some plants depend on the producer either directly or indirectly, so they may be the consumer, and there are some decomposer that usually act when the producer or consumer or the living components died. So decomposer came into the action and do the microbial action, and with the help of the microbial activity or biochemical activity, they degrade the complex organic material into the simple inorganic substance. So we can, if we see at the consumer level, so consumers are again maybe the herbivore, maybe the carnivore, maybe the omnivore, maybe the parasite. In an ecosystem, there is abiotic component, means the non-living things, means the physical component, like the air, like the water, like the land, like the temperature, like the sunlight. So these all comes under the category of the abiotic component of the ecosystem. So my students, by the help of this slide, you will be able to understand the difference between the biotic and abiotic component of the ecosystem. So we have already discussed about these. So let us move to the next slide. So as we people usually know that all food chain start with the energy from the sun. So we usually have heard as well as read in our previous classes that sun is the ultimate source of the energy, and there is the unidirectional way the sun send their energy to the autotrophs, and thereafter the energy reaches into the from the producer to the consumer, and from the consumer to the decomposer. So the transfer of the energy takes place in unidirectional way. And in the ecosystem, there are so many systematic chains are found, or these chains are showing the definite feeding relationship, and these chains are known as food chain. So a food chain usually shows a simple feeding relationship. Uh, and all food chain start with the sun, because sun is the ultimate source of the energy. So usually producers that are usually the green plants. So Rahulji, all the green plants that have the chlorophyll, or as well as there are the blue-green algae that is known as cyanobacteria. These produces their own food using the abiotic component. Like abiotic component, here are the sunlight. Abiotic component, here are the carbon dioxide. So in presence of carbon dioxide, in presence of sunlight, in presence of water, the producer in presence of chlorophyll fixes the sunlight and produces the food by the process of photosynthesis. Hence, the green plant as well as certain bacteria are called as the producer. So because plant produce their own food, that is why they are called as producer. As the consumers are concerned, so dear students, consumers are further divided into the herbivores. So herbivores are nothing but if we see the word herbivore, so herbivore usually made up of two words, herb plus vores. So herbivores are the plant that herbivores are the animals that usually are the plant eater, means they depend on plant to fulfill their demand of the energy.
So usually goat, deer, as well as grasshopper usually comes under the category of herbivores. There are the another category that is known as carnivores. So carnivores are the flesh eaters. We can say like the tiger, like the crocodile. So usually tiger and crocodiles are the flesh eaters. So these are known as carnivores. And there are some animals which are said to be the omnivores. Means omni means sarvahari, sab kuch khane wale. Means they are able to eat both plant and animal like human beings. So human beings are the best example of omnivore. But you have also heard about the parasite. So usually parasite lives on the body of the host organism and take the food from it. So as the parasite is concerned, so parasite may be the ectoparasite, means the parasite that is found over the body. Like we have heard about the lice, that is the head lice or body lice, as well as there are some organisms that is endoparasite, means that is found inside our body, like the ascaris, like the fasciola hepatica, which is known as sheep liver flu, as well as you have also heard about the mosquito that usually takes the blood from outside the body, so it is known as ectoparasite, as well as you have heard about the leech, that is ectoparasite. So parasite are the organisms which live on the body of the host and take the food from it. There are some parasites also found in the plants like कुस्कुटा, popularly known as अमरबेल और आकाशबेल. राहुल जी आपने देखा होगा खेतों में बुंदेलखंड के कई बार अमरबेल और आकाशबेल को देखा होगा, दूसरे प्लांट के चारों तरफ वो सर्किल के रूप में इस प्रकार से उसको घेर लेता है और उससे ये चूंकि टोटल स्टेम पैरासाइट होता है तो स्टेम से जिस होस्ट प्लांट के चारों तरफ ये लिपट जाता है अपने होस्टोरिया की मदद से ये भोजन को वहां से प्राप्त करता रहता है. कुस्कोटा कहते हैं और इसको अमरबेल या आकाशबेल भी कहते हैं जी. सम डिकम्पोजर. राहुल जी आपने हमने बचपन में एक्वेरियम बनाया होगा या हमारे अपने बच्चे एक्वेरियम बनाते होंगे घर में, आपने भी देखा होगा. राइट. सो imagine the situation where we have made an aquarium. So during the formation of the aquarium, we usually take a glass pot as well as take some fishes, and we do the facility of the aeration with the help of employing the aerator pump so that the oxygen supply will be available. Okay. As well as we provide the feed of the fish that usually we buy from the market. So we have developed such aquatic plants and animal. Sometimes in our aquarium we add a few aquatic plants and animals. So then our aquarium becomes the self-sustaining aquarium. So ऐसा हमारे बच्चों ने किया होगा. कई बार हमने आपने एक्वेरियम बनाने के बाद अगर हम उसकी सफाई नहीं करें तो उसमें देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक में पाए जा रहे हैं, कभी बार फिश है जो फिश का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, या कई बार फिश जो छोटी छोटी फिश है वो मर जाती हैं, या इस प्रकार की सिचुएशन होती है, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो उसमें मर जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में हमें और आपको एक्वेरियम को साफ करना जरूरी होता है. हमें आपको एडवाइस किया जाता है कि एक्वेरियम को आप बार बार साफ करिए. और अगर आप साफ नहीं कर रहे हैं तो फिर decomposer came in action. So usually the organism which decompose the dead plant and animal like bacteria, like fungi, so these help in the replenishment of the natural resource. राहुल जी हम और आपने देखा होगा नेचर, हमारे प्रकृति में, नेचर में हम लोगों ने शब्द सुना होगा सर्कुलर इकोनॉमी. ये शब्द कह रहा है कि नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती. मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन बन जाता, और मरने के बाद भी, मतलब उसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी प्लांट या एनिमल की
हमारी पृथ्वी पर जो डिकम्पोजर हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील कर देते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल को। ओके। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं, वो इस प्रकार से जो भी सब्सटेंस यूजफुल पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल को, उसको फिर सॉइल में मिला देती है। इसलिए धरती को हम सर्कुलर इकोसिस्टम या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ओके। राहुल जी, आपने बचपन में कॉमिक्स के माध्यम से, किताबों में, और हमारे बच्चों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, और अक्सर हम लोगों ने बात की होगी कि घास को डियर खाता है और डियर को लायन खाता है। जी जी, तो बिल्कुल। ये एक फूड चेन हुई। मतलब फूड चेन एक प्रकार की सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हुए इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। सो in the food chain, various steps where transfer of energy takes place is called trophic level. So suppose grass is a trophic level, deer is a trophic level, lion is a trophic level. मतलब जहां पर भी ये आपने अभी बात की कि सन से जो एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट उसे कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस यूजेबल एनर्जी में तब्दील कर देती है। और फिर ग्रास को जो खाता है एनिमल, उसके अंदर एनर्जी पहुंचती है और डियर से फिर लाइन में। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, कभी ऐसा नहीं है कि ये इसका रिवर्स में हम देखें कि जो एनर्जी ट्रैप की है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने, वो वापस सन तक चली जाए, या ग्रास को खाने के बाद डियर को जो एनर्जी मिली तो डियर वापस ग्रास को दे दे। तो ऐसा नहीं होता है, ये फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑलवेज टेक्स यूनिडायरेक्शनल वे। सो ग्रीन प्लांट्स, ये देखा गया है जो हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सन से जितनी भी लाइट आती है उसका केवल 1% भाग को वो कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ दी फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हरे पौधे हैं उनमें जितना भी भोजन बना, अब उसके बाद हरे पौधों को तो हमने अभी अभी कहा कि ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को जो खाएंगे वो हर्बीवोर कहलाएंगे, घास खाने वाले। अब ये देखा गया कि जब एक फॉर्म एनर्जी से दूसरी फॉर्म एनर्जी में तब्दील होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में, लाइट के रूप में, साउंड के रूप में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती। तो ये देखा गया कि जो टोटल एनर्जी जो कैप्चर हुई थी प्लांट में, वो जब हर्बीवोर में पहुंचेगी तो केवल 10% भाग ट्रांसफर होगा। 90% एनर्जी वो जो भी ऑटोट्रॉप्स थे वो प्लांट यूज कर लेंगे अपनी लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। सो दिस इज नोन एज 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस प्रकार से प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा, जो लेगा, जो भोजन हरे प्लांट से, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएंगे वो टर्सरी कंज्यूमर। सो ये आप देख रहे हैं कि देखिए प्रोड्यूसर में एनर्जी की अमाउंट ज्यादा है, 1000 किलो जूल, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचता है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर 10% कम हो जाएगा। तो अगले ट्रॉपिक लेवल पे जब पहुंचेगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे, तो देखिए फिर 10% कम हो गया, अर्थात 100 का 10% अगर हम निकालेंगे तो फिर देखेंगे आप कि 10 किलो जूल आएगा। और फिर 10 किलो जूल से टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर पे जब पहुंचेगा तो फिर 10% ट्रांसफर होगा एनर्जी का। तो ये देख रहे हैं, दिस इज नोन एज 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ कहलाता है। अर्थात एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सो अब बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि बहुत सारी फूड चेन पाई जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं से हमारे नेचर में पाई जाती हैं। जैसे देखिए, द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट, दिस एनर्जी being taken by the plant, so this energy is taken by the animals. So like you will be able to see one of the pest that is consuming the leaf. So actually pest is taking the energy from the plant. So similarly bird usually eats the caterpillar or the pest, so the energy is transferred into the birds. And similarly you will be able to see that
honeybee usually take the nectar from the flower. So and as well as you will be able to this beautiful creature. So this is usually eating the freshly growing leaves of the plant. So these because these animals are the first to take the food energy from the plant, that is why they are called as the primary consumer. So my Okay. students, now you will be able to understand why they are called as primary consumer, because these animals are the first to take the food energy from the plants. Similarly, some of these primary consumers have predators. Other animals that feed on them are known as predators. Similar like you, aphids usually, एफिड को हम लोग माहू कहते हैं राहुल जी. तो एफिड्स आर यूजुअली ईटन बाय द लेडी बर्ड. सो लेडी बर्ड इज ए सॉर्ट ऑफ बीटल, ये कीड़ा होता है, ये एफिड को खा जाता है. Okay. So actually it is not bird, it is an insect, but it is popularly known as ladybird. So animal that eat primary consumers are called secondary consumers. So here the ladybird is the secondary consumers. Primary consumers was the aphid. So now it is seen that the ladybird similar like the ladybird eat the aphid. So this bird also eat the ladybird. Okay, Sushil ji, can you hear me? So this bird eats bird, mice, and as well as rabbits. So this is another interesting phenomena is found in our ecosystem, that this bird eats smaller birds as well as mice and rabbit. So we can say that in our nature, so mice and rabbit have other predator. Like you will be able to see that this dog is going to eat a mice. So this is prey and predator relationship. And especially now I would like to ask you, Rahul ji, what will eat the frog? What do you think the frog eat? So frog क्या खाएगा? I think frog जो चीज़ें तालाब में होंगी, एंड आई एम श्योर कि वो छोटी मछलियां हो सकती हैं. Yes, so छोटे-छोटे इंसेक्ट भी खा सकता है. छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो उड़ते हैं आसपास, हम देखते हैं वो अपनी बहुत लंबी सी जीभ निकालता है और उसमें उसको पकड़ के अंदर कर लेता है. Yes. इस तरीके से हो सकता है. So राहुल जी, sometimes it is not entirely clear who eats who. Right. अब देखिए कैसे we can show what goes on with the help of the food web. So this is known as food web. So in a food web there are so many food chain are found. So आप इस प्रकार की फूड वेब में देखोगे कि कोई एक एनिमल कई सारे दूसरे अदर एनिमल को खा सकता है. So ये कई सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बनाती हैं और इस प्रकार से इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है. So हम देख सकते हैं व्हाट वुड हैपन इफ ए डिजीज किल्ड ऑफ मेनी ऑफ द हॉक. समझिए ये मान लीजिए हॉक्स खत्म हो जाएं, जैसे आपने अभी देखा हॉक किस किस को बैलेंस कर रहा है. हॉक देखिए आप देख पा रहे हैं स्नेक की संख्या को बैलेंस कर रहा है और स्क्रू की भी संख्या को बैलेंस कर रहा है. तो अगर हॉक खत्म हो गया मान लीजिए, नहीं कोई बीमारी फैल गई है किसी वजह से, तो अब किसकी संख्या बढ़ने लगेगी? स्नेक्स की बढ़ने लगेगी. स्नेक्स बहुत हो जाएंगे. अब स्नेक की संख्या बढ़ेगी. सो अब स्नेक किसको खाएगा? आप सोचिए जरा. फ्रॉग को खत्म करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा फ्रॉग को खाने लगेगा, स्क्रू को खाने लगेगा जी, क्योंकि स्नेक की संख्या बढ़ गई. अब देखिए एक फूड वेब में एक इकोसिस्टम, हम लोग अक्सर इस पे बहुत चर्चा होती है ना कि इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम हमारा कहीं ना कहीं से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है किसी न किसी ढंग जी. ये देखिए किस प्रकार से एक स्पीशीज जब डिस्टर्ब होती है तो दूसरी स्पीशीज को किस प्रकार से प्रभावित करती है. देखिए स्नेक की संख्या बढ़ गई. अब स्नेक क्या करेगा? फ्रॉग को खाना शुरू करेगा, तो ऑल द फ्रॉग गेट ईटन. अब फ्रॉग की संख्या गड़बड़ा गई. अब फ्रॉग अभी देखिए किसको खा रहा था? आप देखिए फ्रॉग खा रहा था किसको? क्रिकेट को, ग्रासहॉपर को, झींगुर को, इन सबको खा रहा था ना. अब देखिए झींगुर, अब जब फ्रॉग की खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? झींगुर की संख्या बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो अब देखिए खूब सारे देखिए क्रिकेट की संख्या बढ़ जाएगी. तो ज्यादा क्रिकेट होंगे तो वो फिर कैट टेल या ये जो आसपास की वेजिटेशन है उसको डिस्टर्ब करने लगेंगे. तो अब देखिए
more crickets क्या करेंगे? Most of the cattail get eaten by the cricket. So आप ये देखिए, कैटटेल खत्म हो जाएगा वहां से, इकोसिस्टम से। तो आप देख रहे होंगे नाउ द क्रिकेट्स डू नॉट हैव इनफ फूड, सो Right. देयर नंबर्स गो डाउन। अब देखिए उनको भोजन नहीं मिलेगा क्रिकेट को, तो वो धीरे धीरे अब मायने लगेंगे उनको, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो भूखमरी का शिकार होंगे। सर कंक्लूड करिए प्लीज। यस यस प्लीज। सो कितना समय रह गया राहुल जी? बस हार्डली 1 मिनट है आपके पास कंक्लूड करने के लिए। सो हम इस प्रकार से देख पा रहे होंगे राहुल जी कि नंबर ऑफ द ईच स्पीसीज हैव अफेक्ट on the number of the other species in the web. So in the food webs, we will be able to see that how the each species are interconnecting with each other, and this is known as feeding relationship. So in the feeding relationship, usually the energy transfer takes place from the sun to the green plants, and green plants that is known as autotrophs to the herbivores, and herbivores being eaten by the primary consumer and thereafter the secondary consumer. So in the large number of the food chain are interconnected and they form the food web. And usually we have seen that so many other problems being arise in the nature. So in next session we will discuss about the biological magnification. राहुल जी आपने सुना होगा कि DDT का कंसंट्रेशन हम हिंदुस्तानियों में, हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा है, 13 से लेकर 31 ppm तक। या हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि चावल हुआ, गेहूं हुआ, सब्जियों में कीटनाशक पाए जाते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स अखबारों टेलीविजन में हम और आपको देखने को मिलती है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगले टाइम पर कि ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है जब हम कोई ऐसे केमिकल का उपयोग करते हैं अपने इकोसिस्टम में। जी बिल्कुल, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और फिर फाइनली हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो अगले सत्र की जरूर प्रतीक्षा करें और जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने फूड चेन और फोटोसिंथेसिस जैसी सामान्य जानकारी बहुत रोचक तरीके से ये पाठ पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सेशन हम बस यहाँ कंक्लूड करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर द मैसेज ऑफ G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam or the world is one family. इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगले सत्र के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।